Synthetic food is created from substances that are chemically synthesized into edible products. Scientists and labs create food from proteins, carbohydrates, fats, vitamins, trace elements, cells, and even air. You name it. They've probably found a way to make food from it. Is synthetic food safe? As their name suggests, artificial food additives are synthetic ingredients added to food to enhance its color or flavor, extend its shelf life, or improve it in some way. The Food and Drug Administration (FDA) ensures that all food additives on the market are safe for use, or as they say. Synthetic foods are developed from food substances that have been chemically synthesized, also known as artificial foods. These foods generally imitate the appearance, odor, and taste of natural foods. There is very little supply of food that contains complete protein. These synthetic foods are not real foods. They are chemicals that fools the brain to thinking that they are one thing when they actually are another, but actually may be harming the body. So we're about to dive in even deeper to understand what is really going on with this synthetic food. And later on, I want you to watch this video of real and also this synthetic fake food that will be hitting the shelves of stores and many more things. The difference is, I want you to pay attention to this. It's very important that you see this. Why generally engineered foods have some scientists nervous about the future? Synthetic food companies could gravely impact our health, environment, and economy. But the fact is that we're in the dark. Impossible's bleating veggie burger, shrimp made of agu, and vegan cheeses that melt are all making their way into restaurants and onto supermarket shelves, offering consumers a new generation of plant-based protein that look, act, and taste far more like the real thing than ever before. Like I was saying, basically chemically made, basically fake food that tastes like the real thing, but it's not. What consumers may not realize, however, is that many of these new foods are made using synthetic biology, an emerging science that applies principles of genetic engineering to create life forms from scratch. Originally used to produce medicines, biofuels, and super bacteria designed to eat oil spills, synthetic biology is increasingly being applied to the productions of food and fiber, from vegan burgers to spider silk feed for farm fish, synthetic flavors, and animal-free egg whites. A California accelerator, IndieBio, is helping to churn out many of these new businesses. Synthetic biology applications span from simple gene editing combined with fermentation processes to cellular meats that culture food products from animal cells in the lab to gene drive applications intended to change an organism's genetic and the environment, such as a mosquito's ability to spread malaria. For purposes of this discussion, we focus on products and processes that rely on gene editing and combined with fermentation. This is critical updates
from what is actually really going on with the food. If you notice anything with like cereals, even they have grapes that taste like cotton candy, and they have meats that's genetically made, that's not real meats. But the thing is that when you genetically make something, it does not contain all the proteins and all the things the body needs. So it's going to trigger something down the line. So I want you to stay tuned and watch this video to see more. And join me for part 2 next week. हाय, आज मैंने ऑनलाइन कुछ एग्स मंगाए और ये फेक आए हैं, तो आई वांट टू मेक दिस वीडियो टू शो यू हाउ दिस फेक एग्स लुक। तो मैंने कुछ अंडे बॉईल किए, तो ये देखिए ये फेक एग्स है जो टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, दे हैव नॉट कम आउट राउंड। और उनका जो एग योक है दैट इज़ मोर ऑफ येलोइश कलर, और एक साइड में आ गए हैं, ये देखिए येलोइश कलर में है। और मैंने फिर कुछ गुड एग्स, रियल एग्स बॉईल किए, और ये देखिए डिफरेंस, जो अच्छे से राउंड आए हैं और दे आर नॉट ऑफ येलोइश कलर। मैं दीज आर गुड एग्स, दीज आर फेक एग्स, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑल्सो मैं और एक एग आपको, इसमें से आवाज़ आती है, अगर आपको आती है तो ये फेक एग है जिसमें से आवाज़ आती है, और ये मेरा गुड वन है जिसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। तो मैं आपको ये फोड़ के बताती हूँ। ये दिस इज़ अ गुड एग जो मैं अभी आपको, ये गुड वन है, और ये जो है ये फेक वाला है, इसमें से आवाज़ आती है। तो देखिए ये मुझे ज़्यादा, सॉरी, तो ये जब मैं मिलाती हूँ ये गुड वन, तो इसमें मुझे मिलाने में थोड़ा जल्दी से ये मिक्स नहीं होता। देखिए ये जो है फेक वाला जो मैं मिलाती हूँ जल्दी से मिक्स हो जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे हिलाने से भी मिक्स हो गया है, इसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये जो गुड वन है, ये ऐसे ऐसे हिलाने से नहीं होगा, इसको अच्छे से फेंटना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ गुड एग, फुल मिक्स नहीं होता। ये जो फेक है पूरा मिक्स हो जाएगा पानी में, जैसे येलो एंड वाइट पूरा एक वन मिक्सचर हो जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू बाई एग्स ऑनलाइन but to buy it from a reliable vendor. Thank you. Hi friends, உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். உலகத்துல எந்த பாப்புலர் ப்ராடக்ட் வந்தாலும், யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்தாலும், மக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சைனீஸ்க்கு மூக்கில் வேர்த்துரும், இமீடியட்டாக டூப்ளிகேட் பண்ணிடுவாங்க. சரி, சாதாரண கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸில் தான் அப்படி பண்ணுறாங்க, கன்சியூமர் டியூரபிள்ஸில் தான் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா, இப்போ அவங்களுடைய நரி தந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஈட்டபிள்ஸ்லையும் இந்த மாதிரி டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட், டியூபியஸ் ப்ராடக்ட்ஸை பண்ணுறதுக்கு அவங்க முன் வந்துட்டாங்க. வெஜிடபிள்ஸில் எல்லா கடைகள்லையும் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற 4-5 ப்ராடக்ட்ஸில் இந்த கேபேஜ்னு சொல்கிற கோஸும் ஒன்று. அது செடியில் வளர்ந்து தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தா, இனிமே அந்த ஐடியாவை மாற்றிக்கங்க. சில கெமிக்கல்ஸை பயன்படுத்தி வீட்லேயே சின்ன 4 தகர டப்பாவை வச்சு சில ப்ராசஸஸை பண்ணி உண்மையான செடியில் அந்த காயை அறுத்துட்டு வந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த லெவலுக்கு டூப்ளிகேட்டாக இவங்க பண்ணுறாங்க. 100 ஒரிஜினல் கோஸோட இது ஒரு 50 காய் வச்சா
கடவுள் உள்பட யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதுதான் உண்மை. அதை நீங்களே இந்த வீடியோவில் பாருங்க. ஜாக்கிரதையா இருங்க நண்பர்களே. A ver, este día quiero mostrarles un tomate aparentemente muy sano, muy bueno para comerse, pero he descubierto algo increíble. Miré que tenían unas cosas blancas. Abro el tomate y me doy cuenta que algo no estaba bien, estaba un poco diferente. Le quito la parte de adentro y empiezo a ver por qué tenía algo que no, como muy difícil de cortarse. Le pongo agua, me doy cuenta que cuando le estoy poniendo el agua va apareciendo una cosa blanca en su interior, y para mi sorpresa voy descubriendo que el tomate realmente no es un tomate, es algo que es papel, completamente papel. Lo pongo con un poco de cloro y vean ustedes lo que he encontrado. Papel, un tomate completamente falso, hecho de papel, y eso nos están vendiendo, nos están dando por un tomate, supuestamente un tomate. Es una cochinada lo que estamos comiendo y no nos estamos dando cuenta. Es tomate Roma, que lo compré en el súper. Aquí está el tomate, completamente bueno, sano, y en su interior no es un tomate más que solamente un papel de baño, hecho de papel de baño. Y aquí está la prueba. Les vuelvo a hacer otra vez la misma prueba, y van a ver ustedes el resultado de esa prueba. Aquí está. Esto es lo que estamos comiendo. Completamente papel de baño adentro, en su interior. No es tal tomate como lo venden. Espero que tomen acción sobre esto, porque nos están vendiendo solamente cochinadas, y eso es lo que estamos consumiendo.